You're watching Study with Sudhir. This is, of course, your digital classroom. My name is T.S. Sudhir. We are looking at a play called The Mother's Day, written by J.B. Priestley, and this is part of the Snapshot Supplementary Reader for students of CBSE Class 11. This is part of the English syllabus. I must admit, I must confess that this play is not really riveting reading, running into over 20 pages. This can seem like quite a drag. This is in fact much more suitable when you see it on stage, because there it can be really funny given the plot and the storyline of this particular play. There are 5 characters in this play, 4 members of a family and their neighbor, Mrs. Fitzgerald. The 4 members of the family are Mrs. Pearson, George Pearson, Doris Pearson and Cyril Pearson. Okay, and this really happens, this is set in London, in a suburb of London, and that's where this particular phrase comes from, suburban cockney. Okay, with a touch of suburban cockney, which is there on the second page just before the dialogue starts. Now, basically this means a person born within hearing distance, very close to the church bells of St. Mary le Bow, which is an area, which is a church in Cheapside in the city of London. So in that area, how people speak is what is referred to as a Cockney dialect, and it is essentially known for a slightly rhyming way. You know, there is a bit of a rhythm in the way people speak. For those of you actually who come from Kerala, there is a particular town called Thrissur where the Malayalam spoken is also in a bit of a sing-song manner. Okay, now what happens in this particular play? What is the theme of the play? That's something which you need to know, because इसी के ऊपर ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस पूरे नाटक का थीम क्या है. Now the theme of the play is to portray the status of the mother in a household, in a family. She finally decides to stand up for her rights at the prodding of her neighbor. ओके, शी हरसेल्फ, उनकी पर्सनालिटी ऐसे नहीं है कि वे एक तरह से अपने घर में घर वालों से बोलें कि जिस तरह का बर्ताव आप मेरे साथ कर रहे हैं वे ठीक नहीं है. शी इज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु विल स्टैंड अप फॉर हर राइट्स, बट एट द प्रॉडिंग, एट द इंसिस्टेंस of her neighbor, she decides to do so in her 40s. Okay, so which means that for many years in her marital life and with regard to her children, she has led a very docile life. A docile life means essentially listening to whatever is told to her by her husband and her 2 children. So how she reacts and how the rest of the family members, the son, the daughter and the husband react, is essentially the play. This play is a light-hearted play. This is meant to be a light-hearted play, but through the humor, through the wit and the humor and the light-hearted nature of the play, J.B. Priestley is trying to drive home a message. So that's the overall theme of the play. List of characters तो मैंने आपको बता दिया. Now कहानी क्या है? Now Mrs. Pearson is obviously very fond of her family and she works very hard in order to ensure that they remain very comfortable. Okay. But at the same time, मन ही मन में she feels very upset at the way she is actually treated by the 3 members of her family, because nobody seems to care for her और ask her कि तुमको आपको क्या चाहिए ये कभी नहीं पूछते हैं. पूरे दिन वे घर पे रहती हैं, घर का पूरा काम करती हैं. बेटे को क्या चाहिए, बेटी को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, all the work she actually takes care of. And in the evening, when her husband and her 2 children return, she has to do whatever they demand. So that is the basis of the story. This is what is the basic framework of the story. Now, she did not like anything, something which is not very likable to happen in her household, which is why she never kind of questioned their attitude. कि जिस तरह का बर्ताव आप मेरे साथ कर रहे हैं, what you are doing to me is not right. She never points it out because she doesn't want any kind of unnecessary arguments or altercation over the issue. Yet she always wanted their attention and their respect. These are the 2 things that she craves for. Okay, so she goes to her neighbor, Mrs. Fitzgerald, who happens to be a fortune teller. Okay, so she is kind of has some qualities. Now slightly unbelievable hai, a bit like a David Dhawan kind of a story, but anyway we will go ahead with it. So she is a magician and a fortune teller. Okay, एक जादूगर है और भविष्यवाणी भी बता सकती है. एंड एक प्लान बनाती है मिसेस फिट्जगेराल्ड. वो बोलती हैं कि आप और मैं अपनी बॉडीज, अपने शरीर को इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड विल गेट इनटू मिसेस पियर्सन्स बॉडी and Mrs. Pearson will get into Mrs. Fitzgerald's body. अदला बदली
करेंगे अपनी बॉडीज के लिए. ओके, एंड दिस इज बेसिकली सो दैट मिसेस फिट्जगेराल्ड हु इज जो मन में है बोल देती है. ओके, she will enter Mrs. Pearson's body ताकि the rest of the family members think it is Mrs. Pearson, their mother, in the case of the husband, his wife, but it is Mrs. Fitzgerald who will be able to say it directly to the family members what she actually thinks of them. जो हिम्मत मिसेस पियर्सन में नहीं है वो हिम्मत मिसेस फिट्जगेराल्ड जुटा पाएंगी, and she will be able to say what Mrs. Pearson is not able to say, that she wants their attention and she wants their respect. Okay, done. Now, Mrs. Pearson is not very comfortable with the idea, but she agrees, and the two women exchange their bodies, and Mrs. Pearson को डर इस बात का है कि क्या मेरे को अपना शरीर वापस मिलेगा या नहीं. Mrs. Fitzgerald says मेरे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मेरे जादू पर हो जाएगा. She will handle the matter very carefully. Now, Mrs. Fitzgerald in the body of Mrs. Pearson enters the हाउसहोल्ड ऑफ मिसेस पियर्सन. ओके, आप जब आप उत्तर में जब आप लिखें तब आप कंफ्यूज ना हो. ओके, एंड देयर शी स्मोक्स अ सिगरेट. नाउ दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज बिकॉज मिसेस पियर्सन इज नॉट गिवन टू दीज काइंड ऑफ हैबिट्स. सो दैट इटसेल्फ इज टू एसेंशियली शॉक द फैमिली मेंबर्स दैट बाय डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉर्मली नॉट यूज्ड टू डू. ओके, एंड डोरिस पियर्सन जो उनकी बेटी है, शी एंटर्स फर्स्ट एंड शी आस्क्स फॉर कि मेरे लिए चाय बनाओ, एंड ऑल्सो टू प्रिपेयर हर ड्रेस विच शी वॉन्ट्स टू गो आउट विद हर बॉयफ्रेंड. सो शी वॉन्ट्स द ड्रेस, एंड शी वॉज स्टन्ड टू सी दैट मिसेस पियर्सन, हर मदर वॉज स्मोकिंग, एंड दैट चाय नहीं बनी थी और ड्रेस भी बिल्कुल तैयार नहीं थी. एंड शी सेज आई नीड टू गो विद चार्ल्स स्पेंस हु इज माई बॉयफ्रेंड. एट विच पॉइंट ऑफ टाइम मिसेस Fitzgerald, who is Mrs. Pearson, she remarks कि तुमको कोई इससे अच्छा बेहतर नहीं मिला क्या, ये चार्ल्स पेन से तुमको कोई और कोई अच्छा नहीं मिला क्या. And that upsets Doris and she starts to cry. So basically वो शॉक ट्रीटमेंट देना चाहती हैं अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को. उसके बाद उनका बेटा आता है सिरिल पियर्सन, and he is also a little taken aback at his mother's behavior, okay, which he finds to be very strange. And उनके बीच में बहस हो जाती है, they get into an argument, and माँ जाती है in order to fetch stout. Stout means beer, okay, and this is also something very strange because she is not given to drinking beer. So they find it very strange that she is doing things which she is normally not used to doing. So they find her whole behavior very strange, okay, and उनको लगता है कि ये माँ को हो क्या गया है, ये मम्मी को हो क्या गया है. एंड डोरिस को लगता है कि शायद उनकी चोट, उनके सर पर कोई चोट लगी है, that she has been hit. Okay, and उसकी वजह से she is behaving in a strange kind of manner. Okay, so then she enters with a bottle of stout, that it's beer, and a glass half filled with it, and the children begin to laugh, and the mother scolds them saying that behave yourself. Then Mrs. Pearson, that is Mrs. Fitzgerald, tells them कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे काफी डिस्टर्बेंस होता है कि वो आते हैं जाते हैं without bothering about what she needs. Okay, they only demand duties from her, and still nobody is really bothered about her कि काम हो जाए उससे, उसके बाद उनको कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है. So Mrs. Pearson is actually very dismissive. सीधा बोल देती हैं अपनी बेटी को पहले कि मुझे तुम्हारा येलो सिल्क मैंने तैयार नहीं किया है. एंड अबाउट चार्ल्स पेंस शी कॉल्स हिम विद बक टीथ एंड हाफ विटेड, यानी कि बेवकूफ इंसान है. और उसके बाद अपने लड़के के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती है. और किस तरह की आर्ग्यूमेंट होती है, लड़का खुद ही काफी रूड है बिकॉज ही सेज स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैवंट टू मच टाइम. अपनी माँ से इस तरह से बात करता है लड़का. सो ऑब्वियसली Mrs. Pearson, that is Mrs. Fitzgerald, decides to give it back to Cyril, and she says that I have decided that I don't like mending, कि मैं वो काम नहीं करूंगी. तो Cyril says that's a nice way to talk. What would happen if we all talk like that? अगर हम सब इस तरह से बात करें तो कैसा होगा? Cyril does not realize that he himself talks like that. He himself talks rudely to his mother without realizing that he is being very rude and arrogant. So she says, you do talk like that. इस इन लाइन्स पर जरा आप मार्क कर लीजिए. You do all talk like that. If there is something at home you don't want to do, you don't do it. If it is something at your work, you get the union to bar it. Now all that has happened is that I have joined the movement. कि मैंने भी अभी रिबेलियन करने का इरादा कर लिया है. मैंने ठान ली है कि मैं ये काम अब नहीं करूंगी. ओके, सो उसको कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मॉम व्हाट इज रियली हैपनिंग, राइट. एंड उसके बाद शी सेज
दैट वो बियर लेके आती हैं एंड डोरिस एंड सिरिल के बीच में बातचीत होती है एंड उसमें बोलती हैं कि शायद उनको सर पे चोट लगी है। कंकशन का मतलब आजकल क्रिकेट में भी आपने सुना होगा, जब सर पे चोट लगती है और कंकशन सब्स्टिट्यूट भी अभी अलाउ कर दिया है। सो शी थिंक्स दैट शी हैज बीन हिट ऑन द हेड एंड बार्मी का मतलब है मैड, क्रेजी, शायद किसी तरह का पागलपन। एंड देन मिसेस पियर्सन एंटर्स कैरिंग ए बॉटल ऑफ स्टाउट यानी कि बियर एंड ए हाफ फिल्ड ग्लास and Mrs. Pearson says, you two are always talking like being grown up, why don't you try to be your age? यानी कि अपना काम खुद करना शुरू करो। अगर आप you really are adults, are grown up, then you can actually start going and doing your work. So then Doris को बोलती है कि मॉम यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स, यू आर ट्राइंग टू बी इंसल्टिंग, कि तुम बूढ़ी हो गई हो, तुमको हमारे जो जोक्स हैं वो पसंद नहीं आएंगे। एंड मिसेस पियर्सन, दैट इज मिसेस फिट्जगेराल्ड, डिसाइड्स टू गिव बैक टू her daughter. She says, I was yawning at your jokes before you were born, Doris. यानी कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही मुझे तुम्हारे इन जोक्स पे, इन मजाक पर उबासी आती थी। So in that sense, she is also giving it back and insulting her. So Mrs. Pearson अब ये ऐलान कर देती हैं कि अब सिर्फ 40-hour week is what she will do. Just watch it at the weekend when I will have my 2 days off. यानी कि शनिवार और इतवार को, Saturday and Sunday, she will not do any work. She will work only Monday to Friday for 40 hours. So she says it very clearly to her children. Now, उस समय पर उसके and then she says that I may make a bed or two, कि शायद मैं बिस्तर को अरेंज कर दूं and do a bit of cooking as a favor. इन सभी लाइंस को और वर्ड्स को आप मार्क कर दीजिए, which you can use in your answers. Which means that I will have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of, कि मेरे को आपको धन्यवाद बोलना पड़ेगा अगर मैं आपके लिए खाना बनाने को तैयार हो जाऊं शनिवार और रविवार को। ओके, सो बट एनी ऑफ यू 40-hour वीकर्स हु एक्सपेक्टेड टू बी वेटेड एट हैंड, बिकॉज आप लोग 40 घंटा काम करते हैं और शनिवार और रविवार को वीकेंड पर आप आराम करते हैं, तो मेरे लिए भी यही रहेगा। और अगर मैं कुछ करती हूं, इफ आई गो आउट ऑफ माई वे टू डू एनीथिंग, you need to thank me for it. Okay, and sometime I might even go out for the weekend. Go off for the weekend? Doris is shocked. I could do with a change, stuck here day after day, week after week. If I don't need a change, who does? अगर मुझे चेंज की जरूरत नहीं है तो और किसको चेंज की जरूरत है? So she is being very confrontationist. वो हर चीज का जवाब in a very sharp tone she is giving both to her son and to her daughter. Okay, now इसके बाद उनके पति जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है सीन के अंदर। ओके, एंड अनदर थिंग व्हिच शी सेज टू डोरिस इज दैट इफ यू आर ओल्ड इनफ, रोना बंद करो, इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विद चार्ली स्पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपर्ली, नाउ स्टॉप इट। सो शी इज बीइंग वेरी शार्प एंड वेरी कर्ट, बिकॉज उन्होंने निर्णय कर लिया है कि मैं तो अपना पोजीशन है उसको वेरी क्लियरली स्टेट करूंगी अपने घर के अंदर। नाउ जॉर्ज पियर्सन एंटर्स and obviously he's annoyed at his wife sipping stout, तुम बियर पी रही हो। he told her that he would have supper at the club, supper मतलब रात का खाना, and he did not want tea. his wife told him in any case there is no tea and he got annoyed and he says that मुझे चाय नहीं चाहिए। the wife told him that there was no tea. he got annoyed and the wife then said that when he did not want tea, तो तुम लड़ क्यों रहे हो भाई? okay, and Mr. Pearson, जॉर्ज पियर्सन को काफी अचंबा होता है। he is very shocked at this kind of an attitude of his wife and the wife continues to scold him. wife continues to scold जॉर्ज पियर्सन, जिस तरह का उसका बर्ताव होता है, और कहती है कि तुम क्लब क्यों जाते हो जहां पर तुम्हारे बारे में मजाक बनाया जाता है, तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारे बारे में वहां पर मजाक बनाया जाता है, जो कि सिरिल को भी मालूम है, उसके बावजूद तुम वहां पर जाते हो। जाते क्यों हो? जहां पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होती। तुम हर दिन जाओगे तो ऑब्वियसली वहां पर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी। और जब सिरिल इस बात को कंफर्म करता है तो जॉर्ज पियर्सन डस रियलाइज दैट थिंग्स आर नॉट वेरी गुड फॉर हिम एट द क्लब। मिसेस पियर्सन कहती है दे वुड लाफ एट यू इवन मोर देन दे डू नाउ, एंड उसके बाद बोलती है, सो जॉर्ज कहता है लाफ एट मी, दे डोंट लाफ एट मी, उसको मालूम ही नहीं है। मिसेस पियर्सन बोलती है, और इस डायलॉग को नोट कीजिए, मेरी किताब में ये पेज 45 पर है। ऑफ कोर्स दे डू, यू ऑट टू हैव फाउंड आउट
by now. Anyone else would have done that. You are one of their standing jokes. Standing jokes का मतलब कि हमेशा आपके ऊपर मजाक बनाया जाता है. You know, it's a permanent thing. It's a standing feature of the club that तुम्हारे ऊपर हमेशा मजाक उड़ाया जाता है. They call you Pompey Ompy. इस बात को भी आप नोट कीजिए. किस तरह का ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, किस तरह का निकनेम जॉर्ज पियर्सन को उनके क्लब मेंबर्स ने वहां पर दिया है. उनको पॉम्पी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन पूछते हैं बिकॉज दे थिंक यू आर वेरी स्लो एंड पॉम्पस. पॉम्पस मतलब अपने ऊपर काफी घमंड करने वाला इंसान, घमंडी और काफी आलसी हो, इसलिए आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन वहां पर बुलाते हैं. तो उन्होंने एक तरह से पूरा रिसर्च किया है मिसेस फिट्जगेराल्ड ने, जो कि मिसेस पियर्सन के शरीर के अंदर हैं, कि किस तरह का रवैया क्लब के मेंबर्स जॉर्ज पियर्सन की तरफ दिखाते हैं. So she says, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who does not make you look a fool. Okay, you never go out with your wife. You leave her home every night and you go with these club members who are actually calling you by these different names. और जॉर्ज वहां से निकल जाते हैं एंड मिसेस पियर्सन से समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट. कभी कभी उनके मन की जो फीलिंग्स हैं उसको हर्ट होना जरूरी है ताकि उनको असलियत का पता चले, ताकि सो दैट दे कम टू नो अबाउट द रियलिटी एंड द ट्रुथ. इफ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम. ओके, कि अगर वो हर रोज नहीं जाते तो शायद उनके ऊपर इस तरह का मजाक नहीं कसा जाता. ओके, एंड देन मिसेस फिट्जगेराल्ड एंटर्स. Now, who is Mrs. Fitzgerald? The real Mrs. Pearson. Mrs. Pearson जो उनकी माँ है, जो कि Mrs. Fitzgerald के शरीर के अंदर है, वो आती हैं and he says, Cyril says, it is that silly old bag. So not only they ill-treat their own mother, they are also very contemptuous and very insulting towards the lady next door, the neighbor next door, and calls her a silly old bag. Okay. And at that time, Mrs. Pearson says, you don't call her a silly old bag. She's a very nice woman with a lot more sense than you will never have. कि तुम में जितनी अकल है उससे कई ज्यादा अकल उनमें है. So you will never call her a silly old bag. Okay. Then उसके बाद मिसेस फिट्जगेराल्ड एंटर करते हैं, यानी कि उनकी माँ मिसेस पियर्सन इन मिसेस फिट्जगेराल्ड्स बॉडी, एंड शी सेज मेरे को अपना शरीर वापस दे दो. एंड they get into their original bodies and Mrs. Pearson says nothing much, just putting them in their places, that's all, doing what you ought to have done long since. Mrs. Fitzgerald बोलती है उनको, ओरिजिनल मिसेस पियर्सन को, ये काम तुम्हें करना चाहिए था कई साल पहले, लेकिन आई हैव डन दैट, डोंट वरी. और वो उनके शरीर का इंटरचेंज सक्सेसफुली हो जाता है. ओके, सो उसके बाद दे डिसाइड दैट दे विल ऑल हैव डिनर टुगेदर एंड प्ले ए गेम ऑफ रमी. And Mrs. Pearson tells George Pearson that next time a friend and neighbor comes to see me, just say something when you see her, good evening or how do you do or something, and don't just march in and sit down without a word. It's bad manners. So, you know, they really want to kind of hammer it to Doris, to Cyril and to George Pearson कि किस तरह का बर्ताव वो करती हैं. That is absolutely not right and they want to kind of drive it home very very clearly. उसके बाद एक तरह से the family comes together and they are happy together. Now basically the theme of the play is that she is always busy with her never ending household work and the family members ill-treat her, almost take her for granted. Take her for granted is an important phrase that you need to use, and also they are very insulting towards her and they are very heavily dependent टू एंश्योर दैट उनकी जिंदगी अच्छी तरह से गुजर जाए, लेकिन उससे उनकी मां की जिंदगी पर किस तरह का असर पड़ता है उसके बारे में वे बिल्कुल भी चिंतित नहीं है. ओके, एंड दिस शी डिसाइड्स टू रिबल विद द हेल्प ऑफ हर नेबर. सो a main question that you could get is the contrast between Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. That while Mrs. Fitzgerald speaks her mind, she does not take rubbish and nonsense from anybody. She decides to give it back. Mrs. Pearson is not able to. So she behaves like a good friend, a good neighbor, using her powers of magic in order to drive home the point to these three family members कि इस तरह से आप अपनी माँ के साथ बर्ताव कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. So that is what Mother's Day. So the title of the play is also very important कि ये माँ का दिन था. Even though it is not their own mother who spoke these harsh lines, लेकिन Mrs. Fitzgerald expressed what was there in Mrs. Pearson's heart and mind for so many years.
उन्होंने जो उनके मन में था उसको व्यक्त किया. शी वॉज द वॉइस टू मिसेस पियर्सन्स फीलिंग्स. सो इन तरह के पॉइंट्स को आप जरूर लिखिए. एंड शी टोल्ड द फैमिली मेंबर्स दैट Mrs. Pearson, the mother, also needed to be treated in a very humane kind of manner. And not just Mrs. Pearson, even the neighbor needed to be treated with a bit of respect instead of being treated in a very callous kind of manner. So I hope this longish 20-page plus play Mother's Day is clear. As I said, once you have gone through this explanation, which would make it easy for you, just sit and read those 21 odd pages continuously and mark the keywords and the passages which I have highlighted, and उसमें से आप कोट भी कर सकते हैं. MCQs में कोई प्रश्न आए तो उसको भी आप डील कर सकते हैं. You should not have any problem. It's not a very complicated play, but अगर आप मेजर बेसिक थीम्स के लिए आप ये 6-7 पॉइंट्स को नोट कर लें, you will find it very easy and you will be able to quote from the text also. You should be good to go as far as Mother's Day is concerned. So thank you very much. इसमें आपकी एक बड़ी सीख है. If you happen to by chance, and I hope you don't, treat your mother in this manner, please do the course correction. Don't wait for a Mrs. Fitzgerald to bring magic into your mom's life. Thank you very much for watching.